Good morning, students. Today we are going to start a new lesson, the last leaf. Okay, this is a lesson. See, a warming up is given. Suppose you suffer from long term illness, 1 or 2 weeks. What should you do and what should you avoid? Fill up the tables and do's and don'ts. Okay, if you are suffering from the illness, long term illness, so what are the steps you should do and what are the things you should not do? These are some of the things over here. You can go through your textbook. Now see, you already know that homophones are pairs of words that sounds the same but their spellings are in spellings and meanings. Okay, means there are some of the words which has the CS. It spell when we spell it sounds like similar, same, but the meanings are different, quite different. So that is what homophones, मतलब सुनने को शब्द एक ही जैसे लगते हैं पर उसकी स्पेलिंग्स और मीनिंग्स दोनों भी अलग होते. प्लीज कीप इट इन माइंड. homophones are the those words when it is pronounced it feel like the same. जब हम उसको प्रोनाउंस करते हैं तो सुनने को एक जैसा लगता है बट दे आर टू डिफिकल्ट different meanings as well as the spelling. See here for the example, some and some. SUM, this is related to your mathematical sums, alpha you can say, and some means little, thoda ya jo bhi hai we says. There are some words that even have same spellings and pronunciations, okay, but have different meanings in different situation on context. For example, bat, a bird, and a bat, sports, games, equipment. Such words are called homographs. See the difference between the homophones and the homograph. देखिए, in homograph what it is, the spellings are same, but it has two different meanings. Bat is a bird also, and bat is a sports equipment that is used by the cricketer to play cricket. This bat. तो यहाँ पे क्या होमोग्राफ का मतलब वो शब्द एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, बट इसके दो अलग अलग मीनिंग्स होते हैं, उसकी दो अलग ये होते मीनिंग्स होते. ओके फाइन. और यहाँ पे सुनने को प्रोनाउंस करते हुए जब ऐसा लगता है एक ही जैसा है बट टू डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड टू डिफरेंट मीनिंग्स. यहाँ पे स्पेलिंग एक ही है पर meaning अलग अलग. This is the difference between the homophones and the homographs. See, make pair of the sentences of your own to point out the different meanings of the following. Now make pair of sentences of your own to point out the different meanings of the following homographs. यहाँ पे कुछ words, some words have been given here. You have to make two sentences of each word. Okay, which shows the different meanings. See, this is fine. It has two meanings also. Fine is that fine if you don't pay the fees and all you get fine. You have to pay the fine. और दूसरा फाइन है ओके आई एम फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ. एक में ठीक होने का मतलब है और दूसरा में इफ़ यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट ऑन द टाइम यू हैव टू पे द फाइन. तो इसका दो मीनिंग है. वेव ऑल्सो हैज़ द टू मीनिंग्स. One is to wave the tail or we can say wave hand and all, and दूसरा मीनिंग होता है पानी की लहरें. So these are some of the words given over here and you have to make two different sentences having two different meanings. Okay, this is your assignment, you have to do it. I will start with the lesson now. The last slave. In the poorest parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. Among them were the Sue and Chauncey. They had come to New York from different parts of United States. When they met, they found that they shared the same interests and they became friends. They shared a flat and set up a joint studio trying to earn a living through art. Now see, this is a lesson about a story about two artists. One is Sue and one is Chauncey. One is a girl and another is a boy. They both are the struggling artists. Okay, and where are they? In the poorer part of New York. It is a
New York part means the area that where they are talking about is a very poor at New York. There was a colony where struggling artists lived. And that colony, their struggling artists were living. Among these were Shu and Johnsy. These are the two struggling artists also. They had come to New York from the different part of the United States. These two struggling artists, they came from the different part, not from the same place, but different parts of the United States. When they met, they found that they shared the same interest. Both of them were having the same interest, and they became friends. They shared a flat and set up a joint studio, trying to earn in a living through art. What did they do? They shared a flat. They took a flat उन्होंने लिया, and they both stayed over that, shared that whatever the amount what was to be, they shared it. Then they set up a studio over there through her. Johnsy was small, thin, and not very strong. After spending a few months in New York, she became ill with pneumonia. Now, Johnsy was a girl. How was her health? She was small, thin, and not very strong. Means she was a weak girl, not healthy and all, strong, not enough. After spending few months in New York, she became ill with pneumonia. Means she was ill by pneumonia. Pneumonia is some diseases. It takes some many more time to recover. अगर ध्यान नहीं देते हो तो the person will die with pneumonia. So you have to take care who has been suffering from pneumonia. तो आफ्टर सम मंथ्स मतलब कुछ मंथ रहने के बाद न्यूयॉर्क में वो लड़की बीमार पड़ जाती है, एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम pneumonia. In those days, it was not easy to cure pneumonia patient. See what is saying? In those days, earlier क्या होता था, पहले काफ़ी साल पहले क्या हुआ, निमोनिया को क्योर करना इतना इजी नहीं था, तो मैंने इसकी वजह से कुछ लोग वगैरह मरते थे. बट नाउ इट डजेंट हैपन सो. अभी तो सब लोग को समझते हैं, जानते हैं, तो इसका रिकवरी बहुत जल्दी हो जाता है. Though Shu looked after her well, Johnsy showed no sign of improvement. Now her friend Shu helped her, took care of her, but still she was not showing any sign of improvement. मतलब उसके इसमें कोई सुधार नहीं आ रहा था, उसके हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जबकि उसका फ्रेंड शू उसकी अच्छी खासी देखभाल करता था. One day the doctor told Shu that Johnsy had one chance in 10, and that chance is for her to want to live. He said, "Your little lady has made up her mind that she is not going to get well." He told Shu that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. One day doctor came to visit there. Johnsy को देखने के लिए डॉक्टर है, and what he told to Shu कि इसका 10 में 1 का चांस है, मतलब 10 में से 1 का ऐसा ये है कि सर्वाइव कर सकते, बट इट इज़ उसकी चांस है, इट इज़ अ चांस. पर योर लेडी मीन्स योर फ्रेंड इज़ नॉट, शी हैज़ मेड अप ऑफ माइंड, मतलब उसने अपने मन बना लिया कि वो मरने वाली है. इसकी वजह से इसके हालत में ये नहीं आ रहा, सुधार नहीं आ रहा है, सो शी इज़ नॉट क्योरिंग. तो बोलते योर लेडी हैज़ मेड अप ऑफ हर माइंड that she will not get cured. He told Shu that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, सिर्फ दवाई से काम नहीं बनेगा, जब तक एक पेशेंट को मन में ये नहीं रहेगा कि वो ठीक होगा, तब तक ये दवाई भी काम नहीं करेगी. तो शी हैज़ टू मेक अप हर माइंड दैट शी विल सर्वाइव एंड शी हैव टू फाइट अगेंस्ट दिस डिजीज. दैट डे Johnsy just lay in a bed without making any sound or movement. First, Shu thought that she had fallen asleep, but then she noticed that Johnsy was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper. What happened that day? Johnsy was just lying on her bed and making some sound or movement. फर्स्ट शू थॉट दैट शी हैड फॉलन स्लीप. तो फर्स्ट शू को क्या लगा, शी स्लीपिंग, और सोते वक्त कभी कभी स्नोरिंग करने का आवाज़ आते हैं, तो
he thought he's making something noise while sleeping. But then he noticed that Johnsy was looking out of the window. तब उसने देखा कि जॉन्सी खिड़की से बाहर देख रहे, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन ए वेरी लो वॉइस, ऑलमोस्ट अ विस्पर. विस्पर मतलब धीरे से बोलना, विस्परिंग करना, खाना में जैसे हम बोलते धीरे धीरे से, वैसे वो धीरे धीरे से खिड़की के बाहर देखकर झांक के कुछ बोल रही है, गिन रही है. शी वॉज काउंटिंग. शू टू लुक्ड आउट द विंडो बट देयर वॉज नथिंग टू सी, ओनली एन old ivy vine, gnarled and decayed at the roots, climbed halfway up the brick wall. The cold breath of autumn had taken away most of the leaves. Only the skeleton branches were left clinging to the bricks. What is it, dear? asked Shoo. Now what happened? Johnsy was looking outside the window and she was counting slowly something again and again. So Shoo just came near the window and saw. He didn't find anything. शू ने आके देखा कि जॉन्सी क्या देख रहे और क्या गिन रहे. तो जस्ट सो देखने लगता है खिड़की से बाहर कि व्हाट इज देयर, बट ही डिडंट फाइंड एनीथिंग. वहाँ पे क्या था, सिर्फ एक पेड़ था जो उसकी रूट्स वगैरह डिके होते आ गए एंड क्लाइंब हाफ अवे अप द ब्रिक ऑफ द वॉल, यानी दीवार के ऊपर ये करते हुए एक ओल्ड ईवी वाइन का एक पेड़ था. ओके, इट वॉज वेरी ओल्ड. gnarled means here twisted. gnarled means twisted. ओके, एक ओल्ड ईवी वाइन का पेड़ था जो ट्विस्टेड होके उसकी रूट्स जो डिके हो चुके थे. इट क्लाइंबिंग हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, यानी वॉल पे ये हो गए थे. द कोल्ड ब्रेथ ऑफ द ऑटम हैड टेकन हैवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, मीन्स द मोस्ट ऑफ द लीव्स वेर शेड आउट. उसके पत्ते सब जड़ चुके थे, कुछ ही पत्ते उसमें बचे थे. ओनली द skeleton branches were left clinging to the bricks, यानी कुछ उसके ब्रांचेस सूखे से ब्रांचेस थे वो लटक रहे थे ब्रिक्स के पास, दीवार के नल. Now Shoo is asking, what is it, dear? Now he is asking her, what is it? 6, said Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. Now Shoo asked Johnsy, उसके फ्रेंड से पूछते what is there? तो 6 है. Johnsy reply, what she is replying? 6. They have fallen faster now. 3 days ago there were almost 100. मतलब what she was doing, she was counting the leaves on the tree. जो ट्री सूखा हुआ पेड़ जो वहाँ पे था ईवी वाइन का, उसके पत्ते वो गिन रही थी. एंड व्हाट शी सेड, 3 days ago there were hundreds of leaves. मतलब 3 दिन पहले वहाँ उसमें पेड़ में 100 पत्ते थे, अभी only 6 are remaining. Now we'll turn it. Okay. See here, it made my head ache to count them, but now it is easy. There goes another one. There are only 5 left now. 5 what, dear? Leaves on the ivy vine. When the last one falls, I must go too. I have known that for 3 days. Didn't the doctor tell you? Now what is it? She is counting that leaves. वो क्या कर रही थी, अपने हालत को उस पेड़ के पत्ते से रिलेट कर रही थी. व्हाट शी इज सेइंग, जैसे पत्ते जड़ते जा रहे, जैसे ही कम होते जाएंगे वैसे ही उसकी ज़िंदगी के दिन भी कम होते जाएंगे. शी वॉज थिंकिंग सो दैट, पहले से वो अपने हेल्थ के बारे में ऐसे ही सोचती थी कि वो मरने वाली, ये नहीं सोचती थी, पॉजिटिव थिंकिंग नहीं रखती थी, शी विल रिकवर करके. शी वॉज थिंकिंग दैट शी विल डाई. अभी वो पेड़ के पत्तों को गिनने लगती है, उसको पत्ते जैसे झड़ते जाते हैं उसको लगता है कि उसकी ज़िंदगी के दिन भी वैसे ही कम होते आ रहे. तो शी वाज सेइंग इट वाज 100 3 days बिफोर, नाउ इट इज़ 6. आई वॉज फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू काउंट, तभी मुझे गिनने को बहुत मुश्किल हो रहा था कि पत्तों को, अभी काफ़ी आसान होता है. एंड अगेन एट दैट टाइम ऑल्सो 1 leaf फेल्स डाउन, तभी एक पत्ता नीचे गिर जाता है. एंड शी सेइंग देयर इज ओनली 5 लेफ्ट नाउ, अभी सिर्फ 5 पत्ते बचे हैं. 5 व्हाट डियर, लीव्स
ऑन द ईवी, मतलब बोलते ईवी फाइन में लीव्स अभी खाली 5 बचे हैं। क्या डॉक्टर ने आपको देन शी इज आस्किंग शू, क्या डॉक्टर ने तुम्हें बताया नहीं कि मेरी ज़िंदगी भी अभी ख़त्म होने वाली है? ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस। नाउ द शू इज़ गेटिंग एंग्री। अपने फ्रेंड के रवैया देख के, इसके बिहेवियर देख के काफ़ी शॉक भी है, उसे गुस्सा भी आ रहा है। ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड शू। What an old ivy leaves to do with your getting well? Now what he has, वो ईवी पत्ते के झड़ने से और तुम्हारी ज़िंदगी से क्या उससे वास्ता है, तुम्हारे ठीक होने से क्या वास्ता है, इस आसिंग दे। एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो डोंट बी सिली। द डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सीलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल। टेक सम ब्रॉथ नाउ एंड टेक मी बैक टू माई वर्क। Let me get back to my work. Okay, what is telling? The doctor said that you will recover very easily, very nicely. You'll get up well soon, but you have to keep on having some diet over that. आपका तुम्हारा खाना पीना बहुत अच्छा होने चाहिए, and you should have it. So he brought the broth. Broth is a soup. It's a hot soup. वो सूप लेके आके उसे देखते हैं, बोलते नाउ यू ड्रिंक दिस एंड लेट मी गो बैक टू माई वर्क, मुझे अभी अपना काम करने दो। बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। देयर गोज अनदर। नाउ आई डोंट वांट एनी ब्रॉथ, जस्ट लीव जस्ट फॉर आई वांट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क, देन आई विल गो टू। व्हाट शी सिंग, व्हाट उसने क्या देखा कि खिड़की से बाहर, there goes another, means another leaves also fell down and now it was remaining only just 4. तो बोलते I don't want your broth, मुझे वो सूप नहीं चाहिए, I don't want the leaf just 4, अभी पत्ते सिर्फ 4 बचे हैं। I want to see the last one fall. What she says, I want to see the last leaf falling before it gets dark, मतलब रात होने से पहले दूसरे भी पत्ते झड़ जाएंगे और मुझे उन पत्तों को देखना है और उसके बाद मैं भी मर जाऊंगी। आई विल ऑल्सो गो, मीन्स शी विल ऑल्सो डाई। जॉन्सी सेड शू, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आइज क्लोज एंड नॉट लुक आउट ऑफ द विंडो अंटिल आई एम डूइंग वर्क। नाउ जॉन शू इज गेटिंग एंग्री एंड just telling Johnsy that you keep your asking, telling her to give the promise, मतलब प्रॉमिस करो मुझे कि यू क्लोज योर आइज एंड स्लीप, विल नॉट वॉश आउट ऑफ द विंडो, तुम विंडो के बाहर नहीं देखोगी जब तक मेरा काम चल रहा है। अंटिल आई हैव डन वर्किंग, आई मस्ट हैंड दोस ड्राइंग इन टुमारो। दे आर बोथ द आर्टिस्ट, ओके यू नो इट वेरी वेल, दे आर द आर्टिस्ट, ड्राइंग वगैरह करते, स्केचिंग वगैरह करते। तो शू को क्या था, इसको ड्राइंग सबमिट करना था दूसरे दिन। आई मस्ट हैंड दोस ड्राइंग टुमारो, and so he wanted to work over that. I need the light, otherwise I would have closed the window. I don't want to keep you looking at those silly ivy leaves. What is saying? I need the light, बोलता है मुझे लाइट की ज़रूरत है। I need the light, otherwise I would have closed the window. I want to submit it tomorrow. The drawings has to be submitted tomorrow. I don't want to keep looking at those silly ivy leaves. No, he's saying I don't want to look at that ivy leaves. Tell me as soon as you finish. What Johnsy is saying. Tell me as soon as you have finished, said Johnsy, closing her eyes, because I want to see the last one fall. What she's saying to her friend. As soon as you finish your work, you just tell me. I will open my eyes and I want to see that last leaf falling. Try to sleep, said Shoo. I must call Berman up to be my model for the old man that I am drawing. I will not be gone a minute. Okay. What is telling? Shoo is telling, try to sleep. Telling to Johnson to try to sleep. I must call the Berman up to be my model for the old man that I am drawing. Is the word for whom she is drawing. I will not be gone a minute. Old Berman was a painter. Now see, old Berman was a painter who lived on the ground floor. The man was staying in the ground floor. Berman and this Shoo and Johnsy were staying in the upstairs over there on the first floor.
but he was a failure in art. The whole Berman was also a artist, but he didn't get success in his overall career in his life. So they are saying he was a failure. In the remaining part of the lesson, I will be explaining in the next lecture. Okay, you try to read this lesson properly. You'll understand it. It's not very difficult to understand the lesson. It is quite easy. The lesson is quite easy. And the story is also interesting. Try to read this lesson. Try to find what is going to be in the end of the lesson. Okay, thank you.